या 43rd इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक आमच्या वांगडा आसा अनुराग बासू जे जावन आसा डायरेक्टर ऑफ ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म बर्फी. बसु जी, वेलकम टू गोवा एंड वेलकम टू इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. थैंक यू. कैसा लग रहा है गोवा में आके? अच्छा लग रहा है, हमेशा अच्छा लगता है. और ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बहुत बढ़िया है क्योंकि लास्ट 2 साल में आ नहीं पाया, थोड़ा रंज था बिकॉज शूटिंग वगैरह चल रही थी. एंड ये सर स्पेशल है, थोड़ा सा एक यूफोरिया अलग किस्म का है क्योंकि 100 साल है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, सब थोड़े सेलिब्रेशन के मूड में हैं. और इस साल फिल्में भी अच्छी आई हैं. तो कुछ बर्फी के बारे में बताइए. पहले तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? हम कभी बात नहीं कर रहे. गोवन मीडिया भी आप इज़ नॉट अवेयर ऑफ हाउ ये कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप कैसे. मैं ऐसे तो क्या आते जाते कहानी आपके आसपास होते रहता है और आप ढूंढते रहते हैं कहानियों को एज ए फिल्म मेकर. तो मैंने एक ऐसे 2 पन्ने की स्टोरी लिखी थी और लिखते रहता हूँ ऐसे. कहानियाँ मेरा काम है लिखना, वही मेरी रोजी रोटी है, तो मैं कहानियाँ लिखते रहता हूँ. पूरी फिल्म कभी नहीं लिखता हूँ, 2-2 पन्ने की छोटी छोटी कहानियाँ लिखता हूँ. तो ऐसी एक कहानी लिखी थी मैंने. कुछ घटना हुई थी, मैं कुछ NGOs के साथ जुड़ा हुआ था. तो किसी एक NGO में, एक संस्कार धाम करके NGO है गोरेगांव में, तो वहाँ पे एक लड़की थी, स्पेशल किड थी. एंड सो देयर वाज सम इंसिडेंट एंड आई केम बैक एंड रोट दैट स्टोरी. तो जब मेरी काइट्स रिलीज़ हो गई, उसके बाद जब मैं नई कहानी ढूंढ रहा था तो मुझे लगा कि इस फिल्म को बनाना चाहिए और अलग किस्म की फिल्म होगी, नई किस्म की फिल्म होगी. इसमें गोवन कनेक्ट है इलिना डिक्रूज, इनके साथ काम करने लगे क्योंकि वो साउथ में है. साउथ से आई है. इनका पहला बॉलीवुड था. यूजुअली जब हीरोइन जब डेब्यू करते तो यश चोपड़ा टाइप्स का नाचना गाना कलरफुल ऐसा वाला रहता है. ये हाउ वाज इट वर्किंग विद इलिना डिक्रूज? इट वाज रियली ग्रेट. इलियाना इनफैक्ट, और फिल्म तो ठीक है, हमने फिल्म बनाई है, लेकिन क्या होता है, रिलेशनशिप होता है, दोस्ती होता है, और हम सब इतने करीब आ गए हैं इस फिल्म से. आई थिंक आई हैव फाउंड ए फ्रेंड फॉर लाइफ लॉन्ग इन इलियाना. और एंड वी ऑल ऑफ अस RK एंड तो ये वी वर वेरी गुड टुगेदर. एंड इलियाना कैसे आई जस्ट फॉलोड माई गट फीलिंग द डे शी वॉक्ड इनसाइड माई ऑफिस. आई थॉट शी इज़ द वन हु कैन प्ले श्रुति. एंड मैंने उसकी अच्छा हो, क्योंकि मेरा कोई प्रीकंसीव नोशन नहीं था. उनकी कोई भी साउथ की फिल्म मैंने देखी नहीं थी, उनके बारे में जानता नहीं था. तो मेरा एकदम फ्रेश अप्रोच रहा और वैसे ही कैरेक्टर दिया गया उनको. कैसा एक्सपीरियंस था आपका जब आपको पता लगा कि ये ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म है? नहीं, ये मीडिया मुझसे ज़्यादा खुश थी क्योंकि मुझे, हम सब नॉर्मल थे क्योंकि ये क्या इंडिया की एंट्री थी. आप शब्द भी गलत यूज़ करें, ऑस्कर नॉमिनेटेड हुआ नहीं है, ये तो इंडिया की एंट्री है, सिलेक्ट हुआ है. लॉन्ग वे टू गो, हर साल होती है, कोई बड़ी बात नहीं है. हर साल हिंदुस्तान से पीछे जाती है. और हम जिस बारे में खुश थे वो मीडिया कभी कवर नहीं की. हम जिस बारे में खुश थे कि कौन सा फैक्टर था? नहीं, कि वो फैक्टर था कि बुसान फिल्म ऑफिशियली सेलेक्ट हो गए. बुसान फिल्म फेस्टिवल में, ताइपे में, मार्केश में, ओसाका में जा रही है, UN में दिखाई जा रही है. तो वहाँ क्या हो गया, यहाँ तो हम सिर्फ 20 हिंदी फिल्मों के साथ कम्पीट करते हैं. वहाँ यू आर कम्पीटिंग विद वर्ल्ड सिनेमा एंड यू आर गेटिंग इलेक्टेड, सो दैट विल गिव यू मोर हैप्पीनेस. सो विच मीडिया चोज नॉट, बिकॉज दे थिंक ऑस्कर इज द अल्टीमेट फिल्म फेस्टिवल इन द वर्ल्ड. सो तो ये थोड़ा सा शॉर्ट साइटेडनेस है, कम जानकारी लोगों की. हाउ डू यू टेक कि आपको क्रिटिसिज्म भी हुआ था बहुत कि इट हैज़ बीन कॉपीड इंस्पिरेशन, आप कहाँ पे वो स्ट्रीमलाइन करते हो? आपका टेक क्या है? मेरा टेक यही है, मैं कम जानकारी जो बोला, आई जस्ट एक्सटेंड दैट कम जानकारी ऑफ पीपल, बिकॉज मीडिया में भी प्लेगरिज्म बहुत है क्योंकि एक न्यूज़ आता है, सब उसको कॉपी करते हैं. सबसे ज़्यादा कॉपी तो मीडिया में होता है. सो एंड बिकॉज विदाउट नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि क्या बात है, किसने एक ने न्यूज़ किया, हम सब वही न्यूज़ करते हैं. तो बात क्या है, वो जो फिल्में जो शॉर्ट्स हैं, जो कहते हैं कि कॉपी जो यहाँ की मीडिया, और जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि होमाज है, फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो बात को टालने के लिए अभी होमाज कह रहे हैं, पकड़े गए कर कैसे बोल रहे हैं. फिर भी नहीं समझ में आता है होमाज क्यों कह रहे हैं. आप जब शोले, आप अगर शोले को होमाज क्या करेंगे, आप गब्बर सिंह को बोलो कितने आदमी थे. ऑब्वियसली वो तो आइकॉनिक शॉट है, आइकॉनिक शॉट है. राज कपूर को दिखाओगे छतरी में और उसमें सी चार्ज आइकॉनिक शॉट. तो ये जो 40 ये आइकॉनिक शॉट है. कोई भी अंधा फिल्म, मतलब जो फिल्म जानता है, कोई भी बता देगा आइकॉनिक. यू कैन नॉट कॉपी देम, दे आर आइकॉनिक शॉट एज दिस शॉट्स. कोई भी जो सिनेमा को जानता है, सिनेमा की जानकारी रखता है, आप ये शॉट को कहीं मर जाएगा कॉपी करेगा. तो दे आर आइकॉनिक शॉट्स, यू कैन नॉट कॉपी देम, यू कैन जस्ट प्ले होमाज. तो हमने सेम शॉट किया है होमाज देने के लिए. और ये ऐसे नहीं कि अभी बोल रहे हैं, आप देखिए फिल्म के मेकिंग में, देखिए रिलीज़ के पहले जितने इंटरव्यू में रणबीर ने बोला है, मैंने बोला, हम सब ने बोला ये. तो ये जब हो गया, जब हमने सब बोला, फिर अब रिलीज़ हो गया तो हम ही वापस उल्टा बोल रहे हैं लोग क्या. तो हम तो बोले हमने किया है और होमाज दिया है, क्योंकि क्या हो, ये ट्रेंड चला हुआ है इंटरनेशनल सिनेमा में. आर्टिस्ट ने किया था. आप तो कुछ 12-13 सीक्वेंसेस बोल रहे हैं, मिलते हैं. आर्टिस्ट तो बनी पूरी फिल्म इज होमाज ऑफ, एंड इट गॉट सो मेनी ऑस्कर्स. तो ये शॉर्ट साइटेडनेस ऑफ इंडियन मीडिया है, क्योंकि बाहर इसी बात की तारीफ हो रही है.
जब बुसान में लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, दे रोट, he was very sincere to his homage to silent era films. They are praising it, and here in India we are आपने तो जस्ट रिवाइव किया वो revive याद नहीं. है। This is understanding of cinema is very, you know, that's the only problem. तो लोग यहाँ से वहाँ से ये हो गया वो हो गया, तो which is sometimes very sad. जो आप मेहनत करते हैं 1.5 साल तक 2 साल तक, और कुछ लोगों को खामा 2 मिनट के न्यूज़ के लिए सिनिसिज्म कि उतारो इसको यार, अच्छी कर गई, ऐसे कैसे अच्छी कर गई, कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा, बुरा ही करो इसको. तो वो कभी बहुत गुस्सा आता है. ओके बहुत हो गया बर्फी के बारे में। आपके अगले प्रोजेक्ट यू बीन वेटिंग? पता नहीं, मुझे भी पता नहीं एक्चुअली. So are you working? I am also waiting. I am working. That's my job. I'll be writing, but still I don't finish writing, and I don't decide what to do next. Anurag Basu ji, it was pleasure talking Thank to you you. at 43rd International Film Festival. Nice one. man. Thank you. Thank you. Today, a great personality in my opinion. We have David Womak with us, who is none other than the co-producer of The Life of Pi. The movie, as you know, was released as the opening ceremony of IFFI, and it's an honor to have you with us, sir. Thank you. Yeah, so I would say the reason I have chosen to speak to you more than anyone else is because I believe a producer knows the film from start to finish. And A of course- director knows the film from start to finish. Fine. But yeah. I think a producer is there was. Up there. So the first basic question I want to ask you is, being a 3D film and having so many complex designs to it, as a producer, what were the main challenges and obstacles you faced in shooting this film? I think as a producer, when you're working with different directors, there are different challenges, and different projects have different challenges. The challenge you have when working with somebody like Ang is an auteur director. Okay. So you have to spend more time focused on how to support him in realizing his vision. And in this movie, when Ang talks about it, it's water, animals, and children. Correct. 3D. Filming in Taiwan, a country where it's an amazing country, but big international movies, the last big international movie that was filmed in Taiwan was in 1967, Steve McQueen, Sand Pebbles. India as well, big international visual effects movies, that's only been a recent thing. In fact, after us, Mission Impossible came, Zero Dark 30, and I really feel, especially after working in India, I'm changing gears a little bit, No, that's okay. that you're going to see more bigger movies coming Yeah, here 3D. because of our experience, 3D, and also just big effects movies, because the industry here is so experienced that there'll be more. At the press conference, there was a feisty reporter who was of the mindset that the scene in which the tiger eats got Right. a zebra in his jaw Right. was an actually short part of the movie, Right. and he was concerned about the animal's Right. well-being. Now, what most people don't know is that in today's day and age, almost nothing that we see on a screen is shot as such. Right. A lot of it is done in the studio. So, could you elaborate and explain to our viewers? I think with all these things, with all visual effects, beyond animals, whether it's water, flying, any component you see in a movie, I was involved also with Jurassic Park with the dinosaurs. Yeah. The trick is always like magic, it's sleight of hand. And when you do sleight of hand, you want to have many different tricks to create the illusion for the audience. Correct. So sometimes, yes, in the case of the tiger, we did some close-up work. So when you see a real close-up of a tiger, it helps continue the illusion. But also, by working with the tiger and seeing the close-up, you also get references of how he behaves. And that helps the animators and the quality of their work get better. So it's always mixing everything. In our case, with the animals, like I said at the press conference, 90% of the tiger, for example, a little even more than 90%, is digital. Okay. But it was inspired by some of the live action references and work with the tigers. As it's been said so often, there are various themes running through this movie. When I watched it, I identified with the fact that this is a boy who is stranded. He literally has no hope. And in that feeling of despair, there are so many other emotions that go through him that I felt if I was in this situation, maybe I wouldn't have coped in this way. I would have given up. You know, I would have just let myself die. For you, what is the main theme you identified with in this movie? You know what? A movie is, especially in the case of an auteur, I go back to Ang again. Okay. It's true, because this is what, when you work with an auteur, they have their vision.
And the story I told at the press conference, I think, elaborates on Aang's theme of the movie, which is when you read about the book online or when it's studied at all the colleges and universities, they talk about the power of faith. You mentioned the power of faith as well. And I know Aang incorporated that in the movie too. But he also put another layer in, which is the power of storytelling. Okay. That's why the movie ends with, it's your story now. Take it. Okay. You do with it what you want. And when one of the journalists asked me to interpret the movie, I didn't feel Right it's my in doing it. obligation to Yeah, interpret it. I exactly. think everybody gets to interpret it the way they want, just like we do with faith. You obviously have a very impressive list of movies to your name, even G.I. Joe, Cobra, and Right. stuff like the X-Files. G.I. Joe, a very artistic movie, yes. Exactly. So I'm saying, in terms of a personal success now, Yeah. and I would call Life of Pi a huge success. Yes. Where does this rank for you personally? Number one. Number one, without a doubt. Yeah. That's good. Working with the filmmaker Aang's caliber is And an unbelievable lifetime experience. It's also, for Aang and for myself, the longest time commitment. Aang will have been on this movie for 4 years. 4 years. For me, it's 3 years. I mean, there's my marriage, my military service, and this movie. Okay, fine. Yeah. And now we didn't get a chance to talk to you yesterday after the premiere. Yeah. But what emotions were you experiencing when looking at the reaction people gave to it? I'm glad you asked that question. And that was another thing we brought up at the press conference too, was what was unique about seeing the movie in India for the first time, having seen it now at various previews and screenings in the States, is that there was a unique interpretation that is unique to India, and it's how this audience embraced the movie. There were things in the movie about the characters and the story that were uniquely Indian that they connected with magically. And that again goes back to the theme of the movie, which is it's your story my now. story, yeah. So now I get to witness at the Goa Film Festival an Indian audience connect and have their own version of what the movie is about, which is amazing. As we're coming to the end of this, is this your first time in Goa? First time in Goa, but obviously working with Aang, we spent a lot of time in India, India. research, casting, Mumbai for casting, Pondicherry, Munnar, Chennai, because Aang did a lot of research. And even though he couldn't be here today because the movie's opening up in the States, I immediately talked to him last night and had to tell him the great reaction, because one of his biggest concerns making the movie and the obligation he felt was to make sure that it worked, not just as an international movie, but that it was true to also the spirit of India. Okay, fine. And since this is your first time in Goa, what do you feel about the place, the people? Only been here for 24 hours. The festival is amazing. Okay. I mean, the dancing And yesterday and the choreography was beautiful. I'm happy to be here. Have you had time to sample Not yet. any Goan food? Not yet. Not yet. Not Okay. yet. I look forward to it. Yeah. Anyways, thanks so much for taking this time to talk Thank to you us. very much. It was a pleasure talking to you. Yeah. Pleasure. Thanks. Thank you.